Okay. Hello. Yeah. Thank you very much for your kind introduction. और स्लाइड्स ऑन करें तो सोने वालों से कह दो अजहर साहब के इजाज़त से शेयर अर्ज कर इजाज़त है, क्योंकि आपके लिए फिर मसला है, गलत शेयर में पढ़ नहीं सकता, सर भी बैठे में दोनों एंड पे। तो सोने वालों से कह दो कि उनका भी सोना सो लें जिनको मजबूरी है, हालात ने सोने नहीं दिया। तो ये मैंने चेंज कर दिया है, ज़रा कुछ और था ओरिजिनल वर्जन। तो सोने वाले भी कोई सो तो नहीं रहा, ज़रा हाथ उठा के खड़ा करें, तालियां बजाएं, तालियां अपने लिए तालियां बजाएं। गुड। तो इसका मतलब सो नहीं रहे। अगर सो रहे हैं तो वो यू विल मिस दिस वन। अगर आप सो रहे हैं और अगर सोते रहे तो आप खोते रहेंगे, ये मैं बता दूं, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन में के बाद आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आपने तो एक नाइट दी है ना, तो यहां 3 विनर हैं, 3 विनर हैं इस प्रोग्राम में। तो अगर आपने, यार टाइम तो अभी से शुरू ना करो, ये तो मैं बातें कर रहा हूं। हाँ, ये तो अभी बातें कर रहा हूं। सो जरा क्यूआर कोड को जरा कर लें, क्यूआर कोड के बाद मेरा टाइम शुरू होगा। क्यूआर कोड कर लिया? प्लीज बैठे 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 क्यूआर कोड कर लें। देखिए मैं तो जरा अवामी आदमी हूं, अवामी, लेकिन मसला ये कि अवाम के साथ यहां चल नहीं पाऊंगा, तो क्योंकि ये मूव नहीं हो पाएगा। ओके, सो क्यूआर कोड, ओके, क्यूआर कोड कर लिया आप लोगों ने? ओके, सो स्लीपिंग, वी वर स्लीपिंग, सो रहे थे। आईडीएफ ने 2008 में ये स्लोगन दिया था, 2008 में स्लोगन दिया था कि फाइट ओबेसिटी, फाइट ओबेसिटी, 2008। नेक्स्ट प्लीज। एंड देन WHO 2004 में दिया था आईडीएफ ने, एंड देन WHO realized that there is an epidemic of obesity around the world. Okay, so this is again 4 साल बाद WHO. And then now, next please. So now everyone is awake. हर आदमी जाग चुका है, हर एसोसिएशन जाग चुकी है, ADA हो, ESDO हो, EASO हो, any association. Now everyone is talking about the obesity. Everyone is talking about obesity. So बुरा ना मानना आप लोग इस बात का। So obesity remains neglected, my dear friends, for many decades. और क्योंकि, नेक्स्ट प्लीज। सो अगर ओबेसिटी पे, तो मैं जरा सा ये इंटरैक्टिव सेशन रखना चाहते हैं, और ये इंशाल्लाह 20 मिनट में हम खत्म कर देंगे। तो आप में से जरा क्यूआर कोड अगर है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल पॉपुलेशन इन पाकिस्तान हैव हाई BMI इंक्लूडिंग ओवरवेट एंड ओबेसिटी? Go now. Go now. हो गया? अरे इतना आसान सवाल है, इसमें नो क्या? जल्दी कर लिया? कर लिया? ओके, डन। नेक्स्ट। और ओके, तुमने जवाब भी डाल दिया साथ में। ओके, 60%। अभी तक जवाब देखें, अब आप तो सबका ही आ जाएगा, ये तो तुमने क्या? एक मिनट। ओके, and the data, this was our published data in 2018
regarding the prevalence and risk factor about obesity. And 2 दिन से हम बात कर रहे हैं regarding the obesity. And we are not talking about the local data. And this is the local data which we are having. The true Pakistani data which we are talking about, which we need to talk about. How much Pakistani population is obese? So 58% of the Pakistani population has got a generalized obesity. And just look at the rural population, 58%, and an urban population of 54%. And with the central obesity, which means कि अगर आप अपनी कमर नाप लें, तो ये central obesity. Okay, so central obesity, rural population. So you need to think about the rural population. 72% of the rural population has got the central obesity. And 74% of the urban population. So rural population is not so behind in terms of obesity, my dear friends. So ये important aspect है. Next please. And और obesity अकेली नहीं आती, अपने साथ आप लोग क्या कहते हैं, शैबाला कहते हैं, हम तो शैबाला कराची में कहते हैं, तो शैबाले को साथ लेके आती है. और ये शैबाला एक आदमी नहीं है, 2-4 शैबाले हैं. Diabetes, hypertension, central obesity, and dyslipidemia. Just look at this. This is the Pakistani population, what we are talking about, the local data. And this is the NDSP survey 6, which we are talking about. And if you wanted to see कि हम लोग कितने तैयार हैं obesity को मैनेज करने के लिए, कितने तैयार हैं. जिस तरह इस आज प्रोग्राम के लिए तैयारी की है, जिस तरह शादी में जाने की तैयारी करते हैं, जिस तरह वलीमे में जाने की तैयारी करते हैं, कितने तैयार हैं. So there is a proxy measure, is composite matrix to encompass the indicator for national health services coverage, in particular for NCD and obesity. And just look at Pakistan कितना तैयार है obesity को tackle करने के लिए. Just look at the number. Higher the number, the least prepared we are. So we are the least prepared country around the world for tackling the obesity. We are तैयारी नहीं है, किस तरह तैयारी करें. So we are the least prepared country for tackling the obesity. And enough. 2 दिन से हम प्रोग्राम भी इतना रिच था, ओबेसिटी पे लेक्चर्स भी हुई, मास्टर क्लास भी हुई, डिस्कशंस भी हुई. आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं. You people are just listening, and I think there is enough listening. आप लोग बहुत सुन चुके, कितने सुनोगे यार और आप लोग. So just let's hear from you people. Let's hear from you people. Share your thoughts. Let's share your thoughts. Ji, next. So the first question. Go back. Question. Share your thoughts with the QR code. इस तरह आपने जवाब देना है. Question. ये टाइम कट रहा है बस, और कुछ नहीं. ये बैठी हुई टाइम वो देखते जा रही है. नहीं, देख लिया मैंने. ओके. सो ये देखो नेट वीक है इसका. ओके. सो GLP is secreted by, ये तो सिर्फ जगाने के लिए आप लोगों को, न्यूरॉन इन दी हाइंड ब्रेन, L cells of the gut, K cell of the gut, both A and B. बड़ा आसान सा सवाल है. फास्टर फिंगर फर्स्ट. जल्दी, जिसका जवाब पहले आएगा. कर दिया. ओके. नेक्स्ट. नहीं. ओके. So GLP-1 is a multifactorial effect beyond the glycemic control. We know that we are talking about the cardiovascular, we are talking about the liver problem, we are talking about
the other comorbidities related to the obesity, and therefore the GLP-1 agonists are related with this one. Next, please. The tirzepatide is a GLP-1 receptor agonist, GIP receptor agonist, both A and B, or a glucagon receptor antagonist. ये सिर्फ तैयारी हो रही है आपको, तैयार किया जा रहा है आपको. Next. So, which of the following landmark trial have been conducted on tirzepatide? STEP and sustain, surpass and sustain, surpass and surmount, all of these. शेयर करना है थॉट्स अपनी क्यूआर कोड के जरिए, क्यूआर कोड के जरिए शेयर करना है, बोल के नहीं करना है. कर दिया? ओके, लेट्स गो. नहीं नहीं नहीं, पीछे पीछे जवाब चाहिए मुझे. ओके, ये देख लें आप लोग. सो यहीं तो एक वो था, देयर आर टू, ओनली टू, द सरपास एंड द सरमाउंट. सस्टेन जो है वो इसका नहीं है ट्रायल मेरे भाई. सस्टेन इस ट्रायल किसी और का है, ठीक है, पड़ोसियों का है. नेक्स्ट. सो वी हैव सरपास ट्रायल, द 5 सरपास 1, 2, 3 and 4, and these are all tirzepatide trial with the placebo, with the semaglutide, and with the other drugs as well. So our next question is, what is the maximum mean HbA1c reduction observed in tirzepatide in phase 3 surpass trial? आसान समझ रहे थे ना आप लोग. अब है बात, दे दिया जवाब, सबने दे दिया, दे दिया जवाब. ओके, लेट्स गो. So 2.4, and you can see over here, now the surpass 1, 2, and 3, and 4, and 5, you can see in comparison with the semaglutide, surpass 2 trial has got a 2.4% reduction in the HbA1c. Next, please. In surpass trial, approximately what proportion of patients achieve HbA1c of less than 7%? Less than 7%. 2 दिन से सुन रहे हैं आप लोग ये बातें. How much? 45, 60, 85% or 90%? 95%. कर दिया आप लोगों ने? Next. So about 85% proportion of the people got this number, less than 7%. Next, please. And the proportion of the patient achieving an HbA1c of less than 6.5 is again the similar, about 87-85% people. So more effective. And this is the SURMOUNT trial, the phase 3 trial, SURMOUNT 1, weight management in participant with the obesity and overweight, SURMOUNT 2, weight management participant with obesity, overweight, with type 2 diabetes, SURMOUNT 3, maximum weight loss following intensive lifestyle program, SURMOUNT 4, maintaining weight loss with the maximal tolerated dose therapy with the participant with the obesity and overweight, and SURMOUNT 5, comparing the efficacy and safety of tirzepatide with the semaglutide 2.4 and SURMOUNT MMO. इसका रिजल्ट आ जाएंगे. Next, please. Okay, what was the proportion of patients in SURMOUNT trial, one trial, who achieved greater than 15% loss in tirzepatide? How much? 70, 80, or 78? Go there. Yeah. So, 78%. Yeah. Okay. Okay. 78%. Next, please. Next slide.
Surmount trial 1 to 4, what was the range of mean body weight reduction in tirzepatide? 5 to 10%, 8 to 15%, 15 to 20%. Okay. Next, please. So this is the Surmount 2 trial, which comparing the double-blind, multicentral, comparing the safety with the placebo in weight management, and you can see the weight reduction about in the 79% of the people has got this. So this was the result which we are waiting for, the tirzepatide for metabolic dysfunction associated with liver fibrosis, the synergy trial. Yes, 2 minutes more. We are talking about the cardiovascular outcome with the surprise trial, and as was said, do it has got a cardiovascular benefit or not? So the cardiovascular benefit was non-inferior. And what does it mean, non-inferior with the non-deglutide? So what does it mean? क्या इसका मतलब है कि काम नहीं कर रही? It does not mean that it does not work on the cardiovascular outcome. So it has got some benefit. And you need to see the data in the right way, in the right direction. And there is a MACE reduction, 16% reduction in the mortality. And that's in non-inferiority with the deglutide means it is effective for patients who are high-risk type 2 diabetes. And of course not, we can use in the acute cardiovascular disease as well. In patients with the obesity and HFpEF, the tirzepatide reduces which key outcome? Hospitalization only, weight, clinical benefit, and composite CV death or worsening heart failure. And we know that the composite cardiovascular death or the worsening heart failure are benefit in this trial. And this was the HFpEF trial. And this is the coming up, the tirzepatide for reduction of morbidity and mortality in adults with the obesity, and what is the rationale and the Surmount trial of Surmount. It is a randomized, double-blind, controlled trial, 15,000 patients, 664 site, and first occurrence of 5 component composite point, MACE and 2 other points. So there are many things which are coming up. The trial for the kidney disease, a trial for the childhood and adolescence, and trial for the osteoarthritis of the knee as well with the tirzepatide. इसमें कोई सियासी बात नहीं करूँगा मैं. Let's not make the judgment before the trial ends. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your very engaging and enlightening talk. Now it's time to start the much anticipated debate. The question we ask this evening is not simply clinical, it's also philosophical. Is insulin still the gold standard for all, or are we entering an era where newer therapies can take the lead? The screen over here on the stage will show a poll, a QR code that everybody needs to scan and answer 2 questions. We're going to run the poll. I think if you guys were here with us yesterday for the debate, there's going to be a pre-discussion poll and a post-discussion poll, and we'll see how both of our speakers can sway your decisions and your choices at the end of the discussion, their presentations. Can we have the QR code for the first poll, please?